Good morning, dear children. Today we are going to talk about metals and non-metals, and this is part 2 of your previous lecture. So in the earlier lecture, we discussed about the physical property of the metals, in which we talked about the appearance of the metals and non-metals. We talked about the differences in the ductility of the metals and the non-metals. We also talked about the, hardness and the differences in the hardness of both metals and non-metals. So those were all physical properties of these materials. But today we are going to talk about the chemical properties of both metals and non-metals. So these all things are already in their book. So after this lecture, go back to your books, read your chapters, you'll understand it now. So we are starting with the experiments with the metals, wherein we are going to start with the reaction with oxygen. Okay? So let us start. So see the picture on your right. So this is a picture which shows you the rust. So rust क्या होता है? आपने अपने घर में लोहा देखा है? लोहे से बनी कोई चीज देखी है? आप अपने मम्मा डैडी से पूछेंगे आज, वो आपको रस्ट दिखाएंगे. सो जब भी कोई लोहा बहुत दिनों के लिए ऐसी हवा में खुले में हम रख देते हैं, तो हवा में पानी में, सो यू नो बहुत दिनों तक ऐसे बाहर हवा में रहने की वजह से उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है. उसे कहते हैं हिंदी में कि जंग लग रहा है. सो दैट इज एक्चुअली रस्ट. उसी को रस्ट कहते हैं. तो जो आयरन होता है, which is also called as ferrous, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है ना. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जब भी किसी चीज में ऑक्सीजन मिक्स हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेशन. सो अभी हम जैसे रिएक्शन विद ऑक्सीजन कर रहे हैं, so we are talking about the oxygenation. So you have already performed an experiment in your class 7th, wherein you burned a magnesium ribbon in air, right? So while you were burning a magnesium ribbon in air, तो वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा होता है. So oxides form whenever a metal or a non-metal they interact with the oxygen, है ना. So इसी तरीके से रस्ट कैसे बनता है? अभी देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है आयरन. आयरन का symbol here, that is Fe, also stands for ferrous. Oxygen stands for O2 because we have two molecules of oxygen, and we have water, which is called as H2O because we have two atoms of hydrogen and one atom of oxygen, है ना. So when iron and oxygen mix in the presence of water, they make ferrous oxide and ferric oxide, right? So these ferrous oxide and ferric oxide, eventually you see them in the form of a rust, है ना. You see them in the form of a rust. So अगर तो फिर उसके बाद हमारे पास एक litmus paper होता है, right? We have two types of litmus paper. One is red litmus paper and another is blue litmus paper, है ना. So when we use these litmus papers, so we see the nature of the compound which has finally formed in the experiment. So I zoomed this picture for you, and you can see that blue color is appearing in the in the red litmus paper. So red litmus paper is converting into blue color. So when red litmus paper turns into blue, so it tells us कि उस petri plate में, this is a petri plate जो dish रखी है आपके सामने जिसमें rust है. What is this called? This is called as a petri plate. So petri plate में ये जो solution बनकर आया है oxide, it is basic in nature. So जब basic compound कोई red litmus paper से touch करता है, so it turns into blue. So this is how we check that when a metal, reacts with oxygen, then it makes oxide, which is
basic in nature. So similarly, now this is an experiment which is already there in your books. You can read about it later on. So this is another experiment with non-metals, और उसमें भी हम वही चीज कर रहे हैं. This is a reaction with oxygen. So to perform this, उन्होंने एक एक spoon बनाया है. In case you do not have a spoon, which we have in laboratory, so this is the improvised deflagrating spoon. आप देख रहे हैं आपके सामने बना हुआ है. So that needs a wire and a cap of a bottle. So इस तरीके से अगर आप वायर को उसमें डाल के ये कैप बना सके, so this will be the improvised version of a deflagrating spoon. But if you already have it with you in your lab, you don't need to do that. And children, right now, home is not a place to do all these type of experiments. So we will do that later on in school. So right now, just grasp the theory and the concept of what is going on right now. So these are the experiments with non-metal now. So what did they do? What did they do was they took some sulfur powder in this spoon, in this improvised spoon, and then they burned it. And उसको जलाने के बाद उन्होंने इस tumbler के अंदर उसको रख दिया. And then they capped the tumbler, because when you will burn the sulfur powder, it will make fumes. And after that उन्होंने quickly उसमें water भी डाल दिया. ठीक है ना? So sulfur dioxide, when it was burned and water was added to it, so it made an acid. है ना? वो base नहीं बना रहा है, अभी क्या बना रहा है? Acid बना रहा है. So this acid is H2SO3. So the sulfurous acid turns blue litmus paper red. It turns blue litmus paper red. तो अगर हमें देखना है कि ये particular चीज क्या है, is it acidic or not, तो हम वहां पे कौन सा वाला लिटमस पेपर चूज करते हैं? Red litmus paper. Sorry, blue litmus paper, and it turns into red, right? So generally oxides of non-metals, they are acidic in nature. लेकिन जब हम अभी metals के बारे में पढ़ रहे थे in the previous slide, so the oxides of the metals are basic in nature, है ना? तो वहां पे कौन सा कलर आ रहा था? Blue. यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है? Red. Okay. So this is how, when the metals and non-metals, both of them, they react with oxygen, so their output is different. So the compound which they make is different, and it has a different chemical property also. Non-metals are going to make acids, and metals are going to make bases, right? So there is a table in front of you right now, table number 4.4. So you can fill this paper in your book. So for example, the name of the base is calcium hydroxide. So the metal which is in it is calcium. And if you talk about sulfuric acid, so the non-metal which is present in this acid is sulfur. So similarly, so you can find out the names of the acids and bases you have in your chemistry book, and then you can write them here, and then you can make out which metal the acid and base is talking about. So this is how you can fill this table. Then moving forward, अभी हम क्या कर रहे थे? Reaction with oxygen. अभी हम क्या करने वाले हैं? Reaction with water. And yes, we are starting with the metals first. So right now we are starting with the sodium metal. So sodium metal होता है ना, it is very reactive, very, very reactive metal. मतलब reactive and non-reactive. There are two types of metals in chemistry, है ना? So and reactive and non-reactive. And then in reactive, we have highly reactive and less reactive. वो भी एक category होती है ना? So reactive are which are ready to, ready to interact with the other substance, है ना? वो दूसरे substance में मिलके कुछ नया बनाते हैं. लेकिन जो non-reactives होते हैं, they are very neutral. वो किसी के साथ भी react नहीं करते. For example, gold, silver, they are neutral metals, है ना? हम पहनते हैं gold and silver, और हम नहाते भी हैं डेली, हम खाना भी पकाते हैं. तो किसी भी चीज से क्या हमें उससे कोई डेंजर होता है? न्यूट्रल मेटल से बिल्कुल भी नहीं होता. बट कैन वी वेयर सोडियम in day-to-day life? No, we cannot wear it because it is very, very reactive. इससे हमें चोट भी लग सकती है. So this, this experiment will only be done by me in the class. So you are not going to perform it at any cost at your place or anywhere when you, while you are not under observation
of any elder in your house, and this is strictly to be done in the school. So, like I said, sodium metal is very reactive, and जैसे ही वो ऑक्सीजन और वाटर के उसमें आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है और एक बहुत विगरस रिएक्शन होता है. ठीक है. सो इसीलिए अगर उसको स्टोर करना होता है तो ऑक्सीजन और वाटर से तो बहुत दूर लेके जाना पड़ेगा उसे. तो हाउ डू वी स्टोर इट? वी स्टोर इट इन केरोसिन. ठीक है. सो नाउ just to make you understand how it works, you can see the experiment in this beaker. तो इस बीकर में सी एक सोडियम बॉल डाला है. जैसे ही उसको वाटर में छोड़ा, विद इन नैनो सेकेंड्स उसमें फायर लग गया, है ना? कैन यू सी? So this happens when sodium comes into contact with water. So it is highly, highly reactive, and it is very dangerous, and one should not play with it. So now this is the last topic. So this is displacement reaction. तो displace करने का मतलब क्या होता है English में? What is the literal meaning of displacement? Displacement मतलब किसी को अपनी जगह से हटाना और उसकी जगह किसी और को लेके आ जाना, है ना? So this is called as displacement. ठीक है. सो केमिस्ट्री में भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं. इसका मतलब एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड की जगह ले सकता है बड़ी आसानी से. सो दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो टेकन फ्रॉम योर बुक, सो यू कैन रीड इन डिटेल अबाउट दीज एक्सपेरिमेंट्स इन योर बुक. सो आई विल एक्सप्लेन दीज टू यू. सो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 beakers हैं. The first 2 beakers which are blue in color, they have copper sulfate solution. और इसका जो कॉपर का जो कलर है that is blue, इसीलिए the solution is looking blue to you. And the third beaker, it has zinc sulfate. The fourth beaker has iron, so उसका कलर थोड़ा देखो reddish कलर का है. And the last one is again zinc sulfate, तो उसमें कोई कलर नहीं है, it's transparent. तो उन्होंने क्या किया कि इन सारे बीकर्स में लुक इन दी फर्स्ट पिक्चर की बात करें. सो फर्स्ट वाले में कैन यू सी दे हैव एडेड सम पेबल्स, एंड दीज पेबल्स आर एक्चुअली मेटल ग्रेन्यूल्स. सो फर्स्ट वाले में विच इज बीकर ए, उन्होंने कॉपर सल्फेट में जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया है. इन बीकर बी दे हैव एडेड आयरन नेल in beaker B, and they left it for some time. In third beaker, in zinc sulfate, they have added copper, and in fourth, in iron, they have added copper again, and in beaker E with zinc sulfate, they have added iron nail. So when they left it for a few minutes, they found the discoloration. तो आप देख रहे हैं beaker A और beaker B का तो discoloration हो गया. वहां पे आपको समझ में आ रहा है that some reaction has happened. But in beaker C, D, and E, nothing has changed. Can't you see? Right? Nothing has changed. So this means that there was no reaction in C, D, and E. लेकिन A and B में क्या हुआ? Reactions हुए हैं. And what type of reactions they are? They are displacement reactions. So in order to make you understand that, देखिए यहाँ पे एक equation लिखी हुई है. There are 2 balls A and B, and you can see that B is a smaller ball, right? And then there is a white ball called as C. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो C है वो छोटी वाली बॉल विच इज B उसको लेके चला गया, एंड A इज लेफ्ट अलोन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, C इज अ मोर रिएक्टिव मेटल बट A इज अ लेस रिएक्टिव मेटल. तो जो मोर रिएक्टिव होता है ना, वो लेस रिएक्टिव वाले में से ले लेता है, उसकी जो दूसरी ग्रुप है उससे ले लेता है और फिर उसको छोड़ देता है. तो अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल, है ना. सो सिमिलरली इन बीकर ए हमारे पास कौन सा सोल्यूशन था? कॉपर सल्फेट. लेकिन सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक ने कॉपर की ही जगह ले ली, है ना, और कॉपर को अकेला छोड़ दिया. तो हमारा देखो, और ये जो नीचे कॉपर का सेडिमेंट हो रहा है, तो आपको रेड कलर का सेडिमेंट यहाँ पे दिखाई देगा, है ना. एंड इन सेकंड बीकर आयरन इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर. कॉपर तो लीस्ट रिएक्टिव है बोथ फ्रॉम जिंक एंड आयरन, तो वो तो उसको तो कोई चेंज ही नहीं कर पा रहा है ना. एंड लुक एट बीकर सी, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है ब्लू कलर के बॉक्स में. तो बीकर सी में क्या हो रहा है, अभी कॉपर टर्निंग्स को जिंक
कॉपर टर्निंग्स जो थे, कॉपर पेबल्स जो थे, कॉपर को रिप्लेस करना था जिंक को, पर क्या वो कर पा रहा है? नो, इट इज नॉट एबल टू डू. बट लुक एट बीकर ए का इक्वेशन, देयर जिंक हैज रिप्लेस्ड कॉपर, है ना? सो जिंक कैन रिप्लेस कॉपर बट कॉपर कैन नॉट रिप्लेस जिंक. So vice versa नहीं हो सकता. So these are called as replacement reaction, and now you can understand why there are no displacement reactions in beaker D and E also. So this is what I just told you, that blue color solution has turned into colorless solution, and you can see red color copper being sedimented at the bottom of the beaker. So bachas, this is displacement reaction. So now let's read about the uses of metals and non-metals. So this is our part 2 lecture. So in first lecture also we did a lot about metals and non-metals, and now we have finished with the chemical properties of both metals and non-metals. So now let's read about their uses. So metals are used in making machinery, automobiles, airplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. There are many things, right? But what are non-metals used for? So non-metal is essential for our life, which all living beings inhale during breathing. So non-metals used in fertilizers to enhance the growth of the plant. Fertilizer में डालते हैं उसको. Non-metals को water purification के process में हम use करते हैं. Non-metals used in purple colored solution which is applied on wounds and antiseptics. So and as an antiseptic भी एंटीसेप्टिक्स में भी बहुत सारे नॉन मेटल्स को हम यूज करते हैं. और पर्पल कलर्ड सोल्यूशन यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज दिस इज वन थिंग विच एवरीवन नोज इन आवर कंट्री. You know, we have a purple colored solution which everyone applies whenever they cut themselves accidentally, right? Because it is an antiseptic. And non-metals are also used in crackers. जो आप दिवाली में crackers burn करते हो ना, although it is not a very good habit, but it is used in making crackers. So this is it. So this is the last slide of our lecture, and this is the last of this chapter. So read your chapter again, and if you have any doubts, reach me. Okay. Thank you, bacha.